Good afternoon. Nina, Kamling. Yes, sir. Have you arranged drawing instruments? Yes, sir. Okay, good. Let's wait for others 1 more minute, then we will start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Should we start? Where are others? Okay, so let us begin with the lecture. We will see. I don't know why are they late. So we will continue with the problem of ICR which we started in our lab. Okay, first practical. All of you are having this problem with you? Yes or no? Is this problem? Yes, sir. Okay, so I will assume that you have the problem statement. You have drawn this diagram. No need to mention the dimensions over the links. Okay, but remember what dimensions are. Okay, so in order to draw this diagram, you have selected a suitable scale. Okay, and we have shown it with the help of letter K. So your scale is 1:10. So K you take as 10. In by this scale factor, the length of link AB reduces to 30 mm. Okay, this angle will be maintained 60 degree. This is 36 mm and this is 36 mm. After that, we give numbering to the links. Okay, starting with the fixed link.
fixed link is your link 1. So it is your link 1. Then this one is link 2. This is link BC is link 3. And link CD is link 4. If you remember, the RPM of crank AB is given. Okay. So from there we found the angular velocity of link AB. Okay. So you can say that angular velocity of link AB is nothing but omega AB, or which can be shown with the help of letter 2 as suffix. So omega 2 angular velocity of link AB, we found that it is equal to कितना दिया है 10 रेडियन पर सेकंड कुछ दिया है आई थिंक ओके आरपीएम दिया था 100 आरपीएम और ओमेगा ए बी फाइंड आउट किया था हमने 10.47 रेडियन पर सेकेंड सो आई विल राइट हियर omega 2 is nothing but 10.47 radian per second. Okay, so you understand that the unit is radian per second. I am not writing the unit over there. Okay, but you write it 10.47 radian per second. So after it, you have to find out ICRs for this mechanism particular. Yes. Any question you want to ask? Okay. Am I clear? Yes, sir. Okay. So see, ICRs you have seen that there are 4 links. Okay. Number of links are 4. N is equal to 4. And with the help of the formula, we can find out number of ICRs. So number of ICR capital N, it will be equal to, what is the formula to calculate it? It is nothing but small n in bracket n minus 1 upon 2. So using this relationship, we found that number of ICRs are there equal to 6. Now our next job is to locate or find the ICRs for different links. Okay, so 6 ICRs are possible here. You know that at the connection of 2 links, where the 2 links are joined, one ICR lies there. So at point A, link 1 and 2 is there. So one ICR will be there, that is nothing but ICR 1, 2. So I will write here ICR 1, 2. That is nothing but I 1, 2 here. Similarly, at the connection of link 2 and 3, that is at point B, one ICR will be there. That ICR can be named as 2, 3, ICR 2, 3. Okay. Similarly, at point C, you give the ICR name. At this point, which 2 links connect? Link 3 and 4. So I will call it as ICR 3, 4. Okay. And at point D, link 1 and 4 connects. So I will call this point as ICR 1, 4.
So 4 ICRs you have located, and you have to locate the 6 ICRs. 2 ICRs are remaining. So how to locate it? With the help of Kennedy's theorem. What it says, that you consider any 3 links. Any 3 links. Okay. So say I will consider link 1, link 2, and link 3. So together these 3 links will have 3 ICRs. Okay. And how to write those ICR? You write the combination of 2 links. Okay. So which combinations are possible? You know, ICR 1 2 ये एक combination हो गया. Then 1 का combination 3 के साथ. So I 1 3. Okay, this is one. And next is ICR 2 3. This is the next combination. So small digit you have to write first, and the one which is bigger you have to write next. So these 3 ICRs are possible: I12, I13, and I23. So for this combination, all these 3 ICRs, I12, I13, and I23, they will lie on a straight line like this. So if suppose I12 is here and I13 is here, so no doubt you can say that I23 will be on this line, either in between of these two, or on the right side you extend this line, or on the left hand side you extend the line. Getting the Kennedy's theorem? Yes or no? Okay, so I will repeat it and then we will implement it. Okay. So suppose at this point ICR 1 2 is there. And say at this point ICR 2 3 is there, or you can assume anything. I2 3 is there. Okay. So which one is remaining? I13. So I13, you can directly say that I13 will be on this line. I12, I23. Either in between these 2 points here, in between these 2 points, anywhere. Okay. Or this line extended in the right direction, the point may be here, or the same line extended on the left side. Okay, so it may also be here. Okay, but it will be on the same straight line. That is the main thing to remember here. Okay, got it? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now listen carefully. We will implement the same concept here. Okay, so अभी यहाँ पे देखो ये लाइन कौन से 2 ICRs को ज्वाइन कर रही है? एक तो हो गया I12, ओके, और एक कौन सा हो गया? I23. ओके, सो अभी अगर हम इसमें कितने लिंक्स आ रही है? I12 और I23 में 1 2 and 3. तो इसमें कौन सा और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? देखो यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया, तो अभी क्या बाकी है? 1 3 बाकी है, राइट? कैन यू सी इट? 1 3. सो जो ICR I13 होगा, it will be lying on the line AB पर होगा कहीं पर भी.
आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो या अपवर्ड एक्सटेंड कर सकते हो या डाउनवर्ड एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, so what I will do, I will say extend it. Presently I don't know in which direction ICR 13 is there, but I am just drawing a line. Okay, what I know about that, on this particular line ICR 13 is there. I don't know the exact point. Okay, that's why I extended it. Okay, now let us concentrate on this line CD. ये जो लाइन है लिंक CD, इस पर कौन से ICR है? 3-4 है और 1-4 है, करेक्ट. तो इसमें कौन सा ICR हो सकता है इस लाइन पर? 1-4 हो गया, 3-4 हो गया. अभी कौन सा कॉम्बिनेशन बाकी है? 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बाकी है. 1-3 दिख रहा है आपको? 1 and this 3. So ICR 1-3 will also lie on this straight line, the line joining the point C and point D. Okay, so it can lie anywhere in between these 2 points C, D, or line CD extended upward or downward. Okay, so what I will do, I can see that this line is also waiting for the point I13, and on this line also the point I13 will be there. So instead of extending it downward, I will extend it upward. Okay, okay, I know that on this line what I am finding the I13. I have drawn or extended this line in order to find the ICR I13. So this line is also in search of I13. This line is also in search of I13. So there will be one common point, that is nothing but the point of intersection of these two lines. Okay, which will satisfy the condition of being on this line also and on this line also. So this particular point of intersection I will call as I13, as I13. Got it? Got the construction? Yes or no? Yes, sir. Okay. Abhi similarly, let us think of other lines. तो अदर लाइन कौन सा बचता है? देखो लाइन BC बचा है, ये वाला. इसमें कौन से दो ICR है? I23 है और यहाँ पे कौन सा है? I34. तो दो ICR है, तीसरा ICR भी इस लिंक पे होना चाहिए. द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स B and C. तो कौन सा ICR होगा? अभी यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है? 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है. तो विच वन इज रिमेनिंग? विच कॉम्बिनेशन इज रिमेनिंग? 2-4. 2-4 is remaining here. Got it? 2-4. So जो ICR 2-4 रहेगा वो ये लाइन पे रहेगा, लाइन BC पर. तो आप उसको एक्सटेंड इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो. ओके, सो जस्ट एक्सटेंशन ड्रॉ करके रखना है. Like this line I have drawn in search of ICR I24. Okay, if suppose you don't know why this line you have drawn, so you can mark it. उसको मार्क कर सकते हो that ये लाइन पे ICR I24 होगा. ठीक है. Now think of other line.
which line is remaining here? AD, लाइन AD, इस पे कौन कौन से ICR है? I12 है और हियर कौन सा है? I14। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे? 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन है और 1 का 4 के साथ भी कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्बिनेशन रिमेनिंग इज 2 का 4 के साथ, 2 4। ओके, सो ICR 2 4 जो रहेगा वो यही लाइन पे रहेगा, AD पे। ओके, so what I will do, I will extend this line, line AD, like this. Okay, so why I am extending this line? In order to find out ICR 24. Okay, ICR 24. So this particular line is also in search of ICR 24. It is also searching I24. So whenever they will intersect these two lines, that point will be your ICR 24. Okay, I will extend it. Here somewhere I will get ICR 24. Okay, so obviously if this line BC is extended on the other side, right side, or line AD is extended on the right side, they will never meet. Okay, you have to extend it downward also. So suppose if you see that if I will extend the line in this particular direction, they will not meet. So you have to reverse the direction of extension. Okay, so in this way you have located all the ICR, I24, I12, I14, I34 and I23. Okay, so I will ask you to complete this diagram, then we will see the calculation part. Okay, so I will give you like 5 minutes to complete this diagram, then I will show you the calculation.
Okay, guys. Do you need more time? No, sir. Okay. So let us see the calculations. Calculations are very simple, as I told you earlier. Which formula you have to use? V equal to R omega. Just one formula. Okay. So before that, you remember that the ICRs which we will use for calculations, okay, will be those ICRs which are related with link 1. Okay, so you can see that this is related with link 1, I12. So one should always be there in that ICR. That ICR we will use for calculation purpose. So then the ICR I13, this ICR will be useful. Similarly, the ICR I14. Okay, you can use these three ICRs in order to find various velocities. Okay, you can say that this is the center of rotation of link 2. Link 2 का जो center of rotation है वो I12 है with respect to fixed link 1. Similarly, center of rotation of link 3 is I13. Then center of rotation of link 4 is I14. Got it? Okay. Now we will use only a single formula, that is your velocity V is equal to R omega. Okay. So in order to solve this equation, you need to know any two parameters. So third can be found. Okay. So as far as radius is concerned, radius, if we know the center of rotation, we can find out the radius, okay, of any point. Okay, so where to start from? Always start from the link of which some data is given. Okay, so for example, here you can see that angular velocity of link 2 is given. लिंक 2 का एंगुलर वेलोसिटी दिया है, कितना है 10.47 रेडियन पर सेकेंड. सो वी कैन स्टार्ट विद द फाइंडिंग द वेलोसिटीज ऑन लिंक 2. सो वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता है, लिंक 2 का, लिंक ए बी का एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है. नाउ वी विल फाइंड आउट द लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी यू फाइंड ऑफ एनी पॉइंट. ओके, so point A is fixed point, its linear velocity is 0. Okay, then which is next important point is point B. So let us find the velocity of point B. Okay, so how you will write the equation? Velocity of point B is equal to, okay, what is the radius for point B? So radius is nothing but distance between point B and center of rotation. Okay, so अभी आपको क्या कंसिडर करना है? पॉइंट बी जो है लिंक 2 पर और लिंक 3 पर, दोनों पर है, बिकॉज पॉइंट बी इज अ कॉमन पॉइंट. सो व्हाट आई विल अज्यूम, I will first assume that point B is on link 2. Okay, so if point B is on link 2, okay, which ICR will be applicable here? लिंक 2 का ICR. लिंक 2 का ICR क्या है? I12. ओके, अभी B को हमने क्या अज्यूम किया है? लिंक 2 पर. ओके, तो लिंक 2 का ही ICR यूज करना है. I12 से पॉइंट B का कितना डिस्टेंस है? दिस डिस्टेंस,
ओके, मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर k, क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया है वो आपने रिड्यूस करके बनाया है। ओके, एक्चुअली उसका लेंथ कितना है 300 mm, लेकिन आपने 30 mm में उसको बनाया है, तो उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आई विल स्विच ऑन द पावर, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करो कितना है, I12 से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है 30, मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर k, ये उसका ओरिजिनल डिस्टेंस है 30 into 10, that will come as 300. Okay, multiplied by angular velocity of which link, कौन सी लिंक का एंगुलर वेलोसिटी, जो लिंक पर पॉइंट बी है। हमने अज्यूम किया है कि पॉइंट बी लिंक 2 पर है अभी, ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। आपको फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट बी कौन सी लिंक पर है। ओके, उस लिंक के आईसीआर से पॉइंट बी का डिस्टेंस, ये हो गया रेडियस, मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेम लिंक ऑन विच पॉइंट बी इज देयर। ओके, सो कैलकुलेट करो ये कितना है। I12 बी आपने जब ड्रॉ किया था तो ये 30 था, मल्टीप्लाइड बाय k 10, तो ये हो गया 300 mm, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 10.47 रेडियन पर सेकेंड। मैंने यूनिट नहीं लिखा है, आपको यूनिट लिखना है वहाँ। ओके, कितना रहे वेलोसिटी, बताओ। 300 इंटू 10.47, 3141. okay, so you got the answer 3141, okay, point something, and unit you will write mm per second because radius distance is in mm. Okay, mm per second. Okay, now we have to proceed onward. See, पॉइंट P को अभी हमने क्या कंसिडर किया था, लिंक 2 पे कंसिडर किया था, लेकिन पॉइंट B जो है वो लिंक 3 पर भी है बिकॉज इट इज अ कॉमन पॉइंट। सो वेदर point B is on link 2 or link 3, it will not affect its velocity. Okay, so we will write down the formula for velocity of point B. Velocity of point B, okay, considering that now point B is on link 3, point B is on link 3, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिंक 3 का आईसीआर, लिंक 3 का आईसीआर कौन सा होगा, I13। ओके, वी विल राइट डाउन इट, I13 से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, ये उसका रेडियस हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय द स्केल फैक्टर, कितना लिया है अपने स्केल फैक्टर 10 लिया है के, ओके, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ विच लिंक, हमने क्या अज्यूम किया है, पॉइंट बी जो है वो लिंक 3 पर है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 ओमेगा 3। ओके, यू शुड बी एबल टू राइट दिस इक्वेशन। पहले जो इक्वेशन है पॉइंट बी हमने लिंक 2 पे कंसिडर किया था।
ओके, इट इज अ फैक्ट दैट पॉइंट बी लिंक 2 पर भी है। सो लिंक 2 का ICR I12 से बी का डिस्टेंस इंटू के इंटू ओमेगा 2। अभी हमने क्या अज्यूम किया है, पॉइंट बी लिंक 3 पर है, तो लिंक 3 का ICR I13 से पॉइंट बी का डिस्टेंस इंटू के, ये हो गया उसका रेडियस, इंटू ओमेगा 3। लेकिन आप ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि पॉइंट बी जो है वो लिंक 4 पर है, क्योंकि इट इज नॉट करेक्ट। It is correct to assume point B either on link 2 or link 3, not on link 4. Okay. So now you see this equation VB. What is unknown here? Do you know the velocity of point B? Yes, sir. Okay, ये अभी आपने फाइंड आउट किया 3141 mm per second। अभी आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है I13 से पॉइंट बी का डिस्टेंस। देखो आपने ये पॉइंट फाइंड आउट किया है I13, वहां से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, मेजर करो और mm में बताओ मुझे। $49. 49 mm। ओके, और 49 mm को आपको k से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स वो हो जाएगा 490 mm। ठीक है, तो v भी पता है और ये डिस्टेंस भी आपको पता है, तो आप ओमेगा 3 फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इससे हमें मिलेगा ओमेगा 3। फाइंड आउट करो ओमेगा 3 कितना है। ये हो गया 490 और वी भी आपने फाइंड आउट किया 3141। 6.41. 6.41 रेडियन पर सेकेंड। 6.41 ओमेगा 3 आया प्लस 6.41 रेडियन। ओके, राइट, फुल रेडियन पर सेकेंड। ओके, so you found omega 3 means what you found? Omega of link BC, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC आपने फाइंड आउट किया। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? सी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC, यही पूछा था हमने, ये फाइंड आउट किया। अगर आपको पूछा है फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD, इट इज लाइक दिस। ओके ना, अभी आपको क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो ये फॉर्मूला है उसका, V इक्वल टू R ओमेगा। आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको लिंक CD पर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड आउट पता होना चाहिए। सपोज लिंक CD पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C, तो अगर उसको वेलोसिटी पता है, सपोज आपको पता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C ऑन लिंक CD, लिंक CD कौन सा है, लिंक 4 है, तो हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा ICR लेंगे, I14। ओके,